This is chapter sound and hearing, and we are doing test yourself. The first question here is, what is the approximate speed of sound? So we all know कि जो speed of sound है that is less than speed of light. हमें हमेशा light पहले नजर आती है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है. So sound waves take about 3 seconds to travel 1 kilometer. In air, speed of sound is about 330 meters per second. Speed of sound varies with temperature and medium. That means कि speed of sound depend करती है temperature पर और medium पर कि किस medium में travel करिए. For example, it is traveling from air or liquid or solid, and it also depends upon temperature. गर्म मौसम है, सर्दी का मौसम है, so temperature vary करेगा तो speed of sound भी vary करेगी. The next question is, does sound travel at the same speed through all materials? We know that the particle model of different phases are different. Like in solids, the particles are very close to each other and they are properly arranged. In liquids, they have they move freely as compared to solids, and in gases the particles are far away from each other. The maximum distance they achieve or the maximum space they can achieve, they do it. So sound जो है वो different materials में travel करती है different speed के साथ, और उसकी reason यही है कि साउंड्स वाइब्रेशन है और वाइब्रेशंस पास होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर एंड सो ऑन. तो अगर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं तो वाइब्रेशन तेज़ी से पास होगी, और पार्टिकल्स दूर हैं तो वाइब्रेशन बहुत आहिस्ता पास होगी. सो साउंड ट्रैवल एट डिफरेंट speed through different materials. Sound waves are vibrations. In solid, particles are closer to each other. That is why sound travel with fast speed. In liquids, particles have certain degree of freedom of movement. That is why speed of sound is less as compared to solids. In gases, particles are far away from each other. That is why sound travel with slow speed. And if that is not explanation demanded, then you can just write it in the way that speed of sound in different mediums. Solid is greater than liquids, and that is greater than gases. The next question is, in a thunderstorm, the thunder is made at the same time as the lightning. Explain why a person 1600 meters away heard the thunder about 5 seconds after seeing the lightning. मतलब उसने लाइट पहले देखी है और आवाज बाद में सुनी है, तो उसकी रीजन क्या है? So we can answer it in the way that the speed of sound is less than the speed of light. So a person 1600 meters away hears the thunder about 5 seconds after seeing the lightning, because speed of light is greater than speed of sound. Sound waves take about 3 seconds to travel 1 kilometer, but light travel the same distance in an instant. So obviously light travels at a high speed, तो आपको जल्दी आप तक reach करेगी. What is an echo? The reflected sound wave is known as echo. When the sound hits the hard surface, it reflects back. The sound heard after the original sound is known as echo. So reflected sound जब आप बोलते हैं तो sometimes हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है. That is considered as reflected sound. और वो क्यों होता है कि जब हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रैवल करते हैं, हम किसी भी एनर्जी डेसिपेटर वहाँ पर मौजूद नहीं होता जो उसकी एनर्जी को कम करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो वो दीवार से टकराने के बाद वापस आती हैं. That's why we heard the sound. What is an echo time? The time duration between the original sound and reflected sound is known as echo time. अपनी एक्चुअल आवाज़ सुनने के थोड़ी देर के बाद आप अपनी दूसरी आवाज़ सुनते हैं, वही आवाज़ दोबारा सुनते हैं. So that time distance is echo time. What is meant by pitch and frequency of sound? Now these are the parameters through which we can determine the sound. कि sound quality क्या है, आवाज़ ऊपर है, नीचे है, all these things. So pitch is the degree of highness or lowness of the sound. It determines the quality of sound given by the rate of vibrations producing it. मतलब जो vocal cords हैं या string है या जो भी चीज़ है जिससे वो sound produce हो रही है, उसका rate of vibration क्या है? Which is measured by frequency. Frequency of sound is the number of sound vibrations set up in 1 second. एक सेकंड में कितनी दफ़ा कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसे हर्ट्स में मेजर किया जाता है. हर्ट्स मीन साइकिल पर सेकंड. Higher the frequency of sound, higher the pitch. Human ear are able to detect the sound energy from 20 to 20,000 hertz. Then the next question is, the frequency of drum note is 20 hertz. What does this tell you about the drum skin movement? अगर 20 hertz है इसका मतलब है 20 times एक सेकंड में उस ड्रम स्किन ने वाइब्रेट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a drum is hit hard then softly. क्या इम्पैक्ट आएगा, वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? अगर आप हिट हार्ड, you are hitting the drum skin hardly, then obviously volume increase करेगा, and if you are hitting softly तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा? अगर हार्ड हिट करेंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, अगर हिट सॉफ्ट करेंगे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. एम्पलीट्यूड मीन्स
जो आपकी वेव का डिस्टेंस है उसकी मेन पोजीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, गिव 3 सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कोई भी ऐसी आवाज़ या आवाज़ें जो बहुत ऊंची हों, जो डिज़ायर्ड ना हों और जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करें, these are noises. So unwanted or excessive sounds that cause harmful effect on human health, wildlife, and environmental quality is called as noise pollution. Aircraft noise, transportation noise, loud music, firework, public address systems जो use होते हैं, nightlife, these all are the sources and there are numerous other. How can noise level be measured? नॉइज लेवल को मेजर किया जाता है साउंड मीटर से, और साउंड मीटर क्या करता है कि आपकी जो साउंड एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रही होती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, और इसे डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। हाउ मच लाउडर इज मोटर कार और वॉशिंग मशीन में अगर आप कंपेयर करें तो ऑब्वियसली मोटर कार की आवाज़ ज़्यादा है, और एरोप्लेन टेक ऑफ को बेबी क्राइम की जो लाउडनेस है उससे मेजर किया जाएगा, एयरप्लेन टेक ऑफ की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई यू हियर इकोज व्हेन यू स्पीक इन एन एम्प्टी रूम। जब हम एम्प्टी रूम में होते हैं तो हमारी आवाज़ जो वाइब्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसमें वो एब्जॉर्ब हो, सो वो ट्रैवल करती है, हार्ड सर्फेसिस से टकराती है और वापस आती है। So here is the reflected sound. In the living room, there are so many things which act as sound absorber like curtain, furniture, and etc. They absorb sound vibrations, but in an empty room, the sound is reflected by the walls, so the echo is heard. Next question, name 3 soundproofing materials and explain how they work. Soundproofing materials वो materials हैं जो एनर्जी absorb करते हैं, सॉफ्ट फोम्स हैं, वेडिंग है, फैब्रिक्स है, न्यूज़पेपर की लेयर्स हो सकती हैं, एग बॉक्सेस हो सकते हैं, और फैब्रिक किसी भी तरह का वो absorb करता है एनर्जी को। Soundproofing materials act as sound absorbers. Sound vibrational or sound energy move directly into the soft surfaces of the material, and as a result, it gets reduced or fades away. And this is all.